डियर स्टूडेंट्स, गुलिवर एमंग द लिलीपुट। तो जो हमारा यूनिट है, अब हमने कुछ इसमें पढ़ा है, अब हम इसमें कैरी ऑन करेंगे। Gulliver found himself all alone on an island. He left the seashore and walked for some time across open fields. Then he lay down on the soft grass. He was very tired and soon fell asleep. He woke up early in the morning. He wanted to get up, but he could not move his arms or legs. They were tied to the ground with strings. He said to himself, "Oh, I can't move my arms or legs. They are tied. And some animal is moving on my body, sorry. It is walking to my face. What animal can it be?" It was a tiny man, only 6 feet tall. In a short time, there were dozens of little men on Gulliver's body, and there were many more around him. Some among them carried bows and arrows. Gulliver was in Lilliput, the country of tiny men. He wanted to get up. He said to himself, "These strings are not thicker than threads. I can easily break them and free myself." So, dear students, गुलिवर ने अपने आप को कहाँ जजीरे में पाया कि जब वो शिप रॉक से टकरा गया, इट ब्रोक इनटू दो हिस्सों में वो ब्रेक हो गया। तो फिर तो जो उसमें सेलर्स थे उनमें से सिर्फ गुलिवर जो था, तो जो उस जहाज का जो डॉक्टर था, तो वो यहाँ तक साहिल तक पहुँचने में कामयाब हो गया। कुछ देर उसने आराम किया, तो जब उसकी आंख खुली तो गुलिवर फाउंड हिमसेल्फ अलोन इन एन आइलैंड। उसने अपने आप को अकेले कहाँ पाया? जजीरे में। He left the seashore and walked for some time across open field. तो अब साहिल से उसने आगे की तरफ पेशकदमी की, तो ओपन फील्ड्स में। Then he lay down on the soft grass. अब बेचारा थका हुआ था, तो उसने वो नरम घास थी वहाँ पर, उस पर लेटा। He was very tired and soon fell asleep. वो बहुत थका हुआ था क्योंकि उसने स्विमिंग की थी किस्ता शोर तक पहुँचने के लिए, and he was feeling tired. बहुत थका हुआ था और वो जल्दी से सो गया। He woke up early in the morning. जब वो सुबह सवेरे उठा, नींद से जागा। He wanted to get up. उसने जागना चाहा, उठना चाहा, but he could not move his arms or legs. But वो अपनी टांगों और बाजों को नहीं हिला सका। They were tied to the ground with string. उसकी जो बाजू थे या उसकी जो टांगे, वो किससे बांधी हुई थी? ग्राउंड के साथ। किन से? स्ट्रिंग, छोटी छोटी जो धागे थी, तो या वो छोटी छोटी तार जो होती है। He said to himself, "ओह," उसने अपने आप से कहा, "अरे ये क्या हुआ? I can't move my arms or legs." मैं अपनी बाजू और टांगों को नहीं हिला पा रहा हूँ। They are tied. ये किसी चीज से बांधे हुए हैं। And some animal is moving on my body. कोई जानवर, कोई कीड़ा मेरी बॉडी पर रेंग रहा है, चल रहा है। It is walking to my face. ये मेरे चेहरे पर क्या, ये जो एनिमल है, ये जो कीड़ा है, चल रहा है। What animal it can be? ये कौन सा ये एनिमल हो सकता है, कौन सी जानवर हो सकता है?
It was a tiny man, only 6 inches tall. یہ وہ چھوٹا آدمی تھا جو کچھ انچ لمبا تھا. In a short time there were dozens of little men on Gulliver's body. ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا اس کی باڈی پر کیا درجنوں ایسے چھوٹے چھوٹے آدمی چل رہے تھے. اینڈ دیر ویر many more around him. اور بہت سے ایسے چھوٹے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے. Some among them carried bows and arrows. ان میں سے کچھ لوگ تھے جن کے ہاتھ میں کیا تیر کمان اور تیر تھے. تو گلیور واز ان لیلیپوٹ دا کنٹری آف ٹائنی مین. گلیور ایکچولی کہاں تھا؟ لیلیپوٹ میں. لیلیپوٹ یہ چھوٹے ان لوگوں کی کنٹری تھی لیلیپوٹ. ہی وانٹیڈ ٹو گیٹ اپ. اس نے چاہا اس نے مطلب کھڑا ہونے کی کوشش کی. ہی سیڈ ٹو ہمسیلف. اس نے اپنے آپ سے کہا the strings are not thicker than thread. یہ جو انہوں نے جو تاروں سے مجھے باندھ رکھا ہے یہ اتنی بھی مضبوط نہیں ہے جیسے دھاگے کی طرح ہے. I can easily break them and free myself. میں ان کو ایزیلی ان کو توڑ سکتا ہوں، بریک کر سکتا ہوں تو اور اپنے آپ کو آزاد کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے.